In this video, we are going to talk about operators. What are operators and how do they work? तो हम पहले ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे. सो ऑपरेटर होता क्या है? अकॉर्डिंग टू द ईरा इन लवीन, ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर इज अ रूल. सो इट इज अ रूल दैट ट्रांसफॉर्म्स, यानी ये एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा. अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन. ओके, सो यानी ये एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा एक दूसरी फंक्शन में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी टेक एन एग्जांपल. Let's take an example of an operator d by dx which differentiates. So this is an operator which will differentiate. I will take a function that is e power 2x plus 2. Okay. So now what would it do? It will differentiate this thing. So we'll get something like e to the power 2x and a 2. Okay. Because differentiation of this will be 0. Okay. So we get something like this. This is a new function we are getting when once we are, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी ऑपरेटर के साथ. ये ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और हम इस फंक्शन पे इसको ऑपरेट करवा रहे हैं, और हम क्या देख रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है वो एक नया फंक्शन है. Similarly, if we take an example of x, that is a position operator, so we get something like we are operating on this on the same function. ठीक है, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? हमें रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा. So this is a new function. Okay, but it's not always true that we are getting the new function. Sometimes if we differentiate this e to the power 2x, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2e to the power 2x. We're getting a same function and some constant. So ये हमें डिस्कस करना, ये वाला चीज क्या है. ठीक है, अब the sum of operators. How to sum the operators? Okay, sum of operators. So they don't follow the usual ordinary algebra. So they have an own algebra. Okay. Let's suppose if we have two operators A and B. So if we have this, if we have to take the sum of the two operators, we simply write A plus B operator, which is operating on some function f of x. Okay. Now it will follow this rule. So this thing will be equal to the a f of x plus b f of x. So the this is how we write the sum of operators. Similarly, अगर हम लेंगे subtraction of the operators, the same operators a and b, a minus b, we take an arbitrary function f of x and we operate this. So we'll get something like a f of x minus b f of x. Okay, so this is the sum and the subtraction. This is how we carry out the sum and the subtraction of the two operators. Well, of this thing, suppose we have two operators a and b. The a suppose is d by dx. ठीक है, अब हम a को d by dx लेंगे और दूसरा ऑपरेटर हम लेंगे suppose 3. Okay, so these are two operators which we operate on a function x square plus 1. Okay, so we are operating this on this function. Okay, what we'll get, first we have to differentiate this according to the laws of the operators, algebra of the operators. We have to differentiate this thing. Okay, x square plus 1, and then we take the multiplication of this thing. Okay, so this is basically what this means. And similarly, if it's a subtraction, so we'll write d by dx minus 3 and we'll operate this same thing. Now in an operator is not always that we are getting one variable or we are having one variable. An operator can have a number of variables. It can have multiple variables. Like if we know about this Laplacian operator, so Laplacian operator is what? D by dx square plus d by dy square. So double differentiation of everything.
So we're getting the three variables in this. So in an operator, we can have a number of variables. It's not always that we are only having the one variable in the operator. So हमें operator में बहुत सारे क्या हो सकते हैं variables हो सकते हैं ठीक है Okay, now let's move forward to the product of the operators. How we multiply the two operators. So if we have two operators A and B same, and we have to find out the product of the two operators, we take an arbitrary function which will be equal to this A B f of x. Okay. So what does this mean? What does this mean? This means once we have something like this, the product of the two operators operating on a function, we first operate the left hand side, the operator which is present on the left hand side of the function, we operate this thing, and then we'll operate with the a, and then we'll operate with the a. Suppose let us take an example of this. Let's take an example of this d by dx. So ये एक एग्जाम्पल है ठीक है तो d by dx और x और एक ऑपरेटर है और ये हम ऑपरेट करवाएंगे एक आर्बिट्री फंक्शन f ऑफ x पे ठीक है तो जब हम ये करवाएंगे I we know that first we have to operate the x on this function, and then we can operate the d by dx on the new function that we are getting by operating x on f of x ठीक है तो हम क्या करेंगे so d by dx जब हम ऑपरेट करवाएंगे x को f of x पे so simple we are getting x f of x, and now we are differentiating this by product rule. We know that x bar d by dx f of x plus something like f of x bar d by dx of x. So we're getting something like x, the first differential of the function, and then the function itself. Okay. So हमें क्या पता चला जो मल्टीप्लीकेशन है अगर हमें मल्टीप्लीकेशन पता करनी है तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू ऑपरेटर्स विल बी टेकिंग आउट द फंक्शन विल गेट समथिंग लाइक x d by dx plus 1. So this is actually the multiplication of the two operators, but it doesn't follow the ordinary algebra. It follows a different kind of algebra. That means if you have something like how to add in slide, if you have something like if you have something like A and B are operators, we can't say that A B will be equal to B and A. Sorry, B and A. So these don't follow the ordinary algebra. So suppose if we have two numbers like 3 and 1, 3 multiplied by 1, we can easily say that it will be equal to 1 multiplied by 3. But in case of operators, we can't say that. We can't हम ये नहीं कह सकते कि A B बराबर होगा B A के क्योंकि ये different kinds of result देंगे. Suppose अगर हम यही लेंगे, यही example लेंगे हम, let's insert a new slide. Okay, now so अगर हम एग्जाम्पल लेंगे सेम हम एग्जाम्पल लेंगे डी बाई डी एक्स अभी लिया था हमने पहले हमने डी बाई डी एक्स लिया अब हम एक्स को पहले लेंगे और बाद में डी बाई डी एक्स को लेंगे और हम एक फंक्शन लेंगे और हम इसका रिजल्ट देखेंगे अब इसका रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा सिंपल पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन okay so we'll get something like this and then we have to operate with x okay so we'll get something like x fx. And if we find out the if we need to find out the multiplication, we take the function out and we get something like x d by dx. Okay, so these two are different. These two are different. So suppose now we take an example of another function like a real function. Okay, x first x d by dx of e to the power 2x. Okay, so what we'll get? We'll get something like first we have to operate this d by dx on e to the power 2x. So what we'll get? We'll get something like 2 e to the power 2x. And then we have to operate this thing with an operator x. Okay.
So what will we get? We'll get something like 2x e to the power 2x. But now do the reverse of this. If you are doing the reverse of this, like फर्स्ट हम लेंगे dy dx, उसके बाद हम लेंगे x, उसके बाद हम लेंगे फंक्शन e to the power 2x. Now we have to operate e to the power 2x with x. Okay, so we'll get something like x e to the power x. Now we have to differentiate this thing by product rule. We can say x bar d by dx of x plus e to the power, sorry, e to the power 2x, and then e to the power 2x bar d by dx of x. So we'll get something like 2x e to the power 2x plus e to the power 2x. So these results are different. This is if you're taking out the, so अब हमने देखा, क्या देखा, ए बी अगर ऑपरेटर है ये नहीं होगा बराबर बी ए के, ठीक है, लेकिन कभी कभार ये बराबर भी हो सकते हैं, और तब क्या कहेंगे हम, तब कहेंगे हम जो ए एंड बी है वो आपस में कम्यूट करते हैं, वो आपस में कम्यूट करते हैं. So by this we mean if we take the commutator of A and B, so A and B, and this is the commutator of A and B. If we take the commutator of A and B, and if it equals to 0, that means they will commute. And if commutator of A and B is not equal to 0, that means they don't commute. Okay. So मतलब क्या है इस commutator का, इसका मतलब ये है सिंपल, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए है, ठीक है. So commutation means we are subtracting the AB minus B operator. Okay. So if we are getting 0, that means AB and BA are same. And if we are not getting 0, that means AB and BA are not same. Now we'll take different examples of this commutators. How to find out the commutator of two different operators. Suppose we have an operator like d by dx same and an x, and we have to find out the commutator of d by dx and x. Okay, so we take an arbitrary function or x d by dx, whatever. Okay, we take an arbitrary function and we first क्या करेंगे, हम इसका मतलब ही होता है x d by dx, ठीक है, यानी ए बी माइनस बी ए. सो ए बी माइनस बी ए लिखेंगे. ओके, ए बी, अगर हम साई एक फंक्शन लेंगे आर्बिट्री फंक्शन माइनस बी ए यानी x को बाहर रखेंगे हम d by dx of psi. So this psi is an arbitrary function. Okay, so we are finding out the commutator of this thing. So अब क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे, d by dx of psi माइनस, सॉरी, प्लस psi को बाहर रखेंगे, d by dx of x माइनस x d psi by dx. So we'll get something like this. और हम इसको और इसको मार सकते हैं, तो हमें मिलेगा क्या, d by dx of x, that is actually psi, that is actually psi. If we take out the arbitrary function, we get something like 1. So the operator, sorry, the commutator of these two operators is 1. That means they don't commute. They do not commute. यानी ये दो commute नहीं करेंगे भाई. यानी d by dx x बराबर नहीं होगा x d by dx के. इसका मतलब यही है, ठीक है. So they don't commute. If we take another example, like in the reverse order, we take x and d by dx, okay, and find out the commutator of this. So what will be the commutator of this? अब ये इक्वल नहीं है तो हमें इसका भी कम्यूटेटर निकालना पड़ेगा. तो इसका कम्यूटेटर क्या होगा, इसका कम्यूटेटर सिंपली वी टेक एन आर्बिट्री फंक्शन. अब ए बी और जाए माइनस डी ए और जाए. Okay, so once we do this, we'll get something like
we'll get something like x d xi by dx को ऐसे ही रखेंगे हम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, x बाहर d by dx of xi माइनस, so माइनस माइनस xi bahar d by dx of x. So these two will get cancelled out. So we get something like minus 1. If we take the function out, we'll get something like actually minus xi. We take the function out, we'll get something like minus 1. So now we know the commutator of d by dx and x is plus 1 and the commutator of x d by dx is minus 1. If और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं, लाइक हम लेंगे एग्जाम्पल को एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स. Okay, now we have to find the operator, commutator of this thing. We have to find the commutator of these two operators. So this is another operator now, and this is another, this is the same operator by the way. अब हम क्या करेंगे, इसका ऑपरेटर कम्यूटेटर निकालेंगे. तो कम्यूटेटर का मतलब क्या है, ए बी को रखेंगे और एक फंक्शन को रखेंगे, आर्बिट्री फंक्शन, माइनस फिर b को रखेंगे पहले, b क्या है d by dx, और a को रखेंगे फिर बाद में, और एक फंक्शन लेंगे हम xi. तो ये है कम्यूटेटर इसका. अब वंस वी फाइंड आउट इट, वी गेट समथिंग लाइक, ये तो ऐसे ही आएगा. अब एक्स स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, d by dx ऑफ xi. ओके, प्लस ये अब ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे भी आएगा. तो अब क्या करेंगे हम, xi को बाहर निकालेंगे, d by dx ऑफ x square. So we get something like x square d by dx of xi minus x square dxi by dx minus xi. अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x. You know that the differentiation of x square is 2x. So अब ये और ये मर गया, तो बचा क्या, माइनस टाइम्स xi 2x, माइनस टाइम्स xi 2. अब हम फंक्शन को बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टाइम्स 2x. So this is the operator, not operator, this is the commutator of this thing. Okay, this is the commutator of this thing. So अगर हमें commutator ये है तो जीरो तो नहीं आया, अगर जीरो आता तो हम कहते they commute. अब जीरो नहीं आया तो they don't commute. So they do not commute. अब हम इसी का रिवर्स निकाल सकते हैं, यानी पहले हम d बाई डी एक्स को लेंगे, बाद में एक्स स्क्वायर को लेंगे. ठीक है, अब इसका कम्यूटेटर निकालोगे, इसका कम्यूटेटर क्या आएगा, सेम, पहले हम a फिर b. क्या होता है कम्यूटेटर ऑफ a एंड b, क्या होता है, अगर आप भूल गए, क्या है, a b माइनस b a. ओके, सो दिस इज द, सो ये a b और एक फंक्शन लेंगे हम आर्बिट्री, माइनस बी ए एक्स स्क्वायर को पहले d बाई डी एक्स ऑफ xi और एक फंक्शन. सो वंस वी फाइंड आउट, ये क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल फिर से वही. ओके, सो फिर xi बाहर d बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी xi बाई डी एक्स. तो ये और ये कट गया भाई, बचा क्या वहां पे, बचा xi 2x. और अगर हम क्या करेंगे, फंक्शन को बाहर निकालेंगे तो हमें निकल के आया 2x, which means they do not commute. यानी ये दो ऑपरेटर commute नहीं करेंगे. Okay, so this is all about the commutation of the operators. And now moving on, we find out the square of the operators. What is the square of operators? अब हम पता करेंगे square of operators क्या होता है. Square of operators. What is the square of operators? Square of operators, suppose we have an operator A, okay, and we are squaring it. So square of operator क्या होगा, square of operator simply होगा A और A. Suppose we have a function, अभी हम e to the power 2x को ही लेंगे और हम इसको
इस स्क्वायर ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करवाएंगे, तो इसका मतलब वही है भाई जो हमने पहले पढ़ा। अगर ये ट्रीट करेंगे हम ए बी की तरह, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज ए एंड 2x। ओके, सो पहले इसका ऑपरेशन करवाएंगे, फिर a का ऑपरेशन करवाएंगे, लाइक इफ वी हैव d बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जाम्पल, okay, we have this thing d by dx square e to the power 2x. So what we will get, we will get something like similar. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d by dx e to the power 2x। इसको करेंगे हम ऑपरेट, जब हम ऑपरेट करवाएंगे तो 2 e to the power 2x, अब हम फिर से करवाएंगे ऑपरेट तो आएगा something like 4 e to the power 2x। So I hope you understood the square of the operators, and now moving forward we are going to learn about the linear operators in the next lecture. I hope you will join me